Hi, welcome. This is Ashwini Shami from Omniscience Capital. And for today's discussion, I have my partner Dr. Hello, Vikas Gupta with everyone. me. Yeah, so today we are discussing a very interesting topic, and it is in news. Everyone wants to talk about it, know about it, and how is it an investment opportunity is something जो आज हम discuss करने वाले हैं, and I'm talking about the AI revolution. So this is one of the most or very important disruptive revolution or thing that is happening with humankind. We have seen, revolutions earlier in human history, and maybe Vikas can talk about that very briefly. And then we will get into, what is AI and various Yes, so things about we it. are into what we call the third revolution. First revolution for human beings, before anything was there, it was just hunting, gathering, right? And that was a lot of human intensive effort. Your kind of productivity was purely your efforts, human beings, right? Gathering fruits and running after fruits. Then came the first revolution, which is agricultural revolution. Sure. Right? With agricultural revolution, the land became important, right? And that specific piece of land, which was fertile, etc. And the human efforts combined with that. Very long time later came the industrial revolution. Right? And in industrial revolution, land becomes important, labor becomes important, and capital also becomes important. Right? So ये हो गया second revolution, or then comes the third revolution, which is the AI revolution. Okay, AI revolution में अब human, not only human effort is reduced, brain's effort is reduced, right? So even that is no longer required to be used as much. AI will do all of those things. So, because AI is not a new term, it's popular, and we have seen movies made on this concept Right. and how the future will look like. Absolutely. But very recently, we have started seeing a lot of use cases that have become popular now. मतलब अभी कंप्यूटर है या फिर systems are making paintings. Absolutely. फेमस पेंटर्स के जो इम्प्रेशंस हैं उनको आप रिक्रिएट कर सकते हो अपने सब्जेक्ट आइडियाज पे, सब्जेक्ट मैटर पे. You can create notes, you can create presentations, you can create websites, you can create legal documents. बिल्कुल. So and specifically things like chat GPT, DALL-E, and these things have become very popular and mainstream, right? So Correct. everyone is using them, and this is one line of or one area where AI is now becoming mainstream. So before getting into deeper, talk about like what AI at the core, AI का how it स्टेटस works. एटलीस्ट इतना है जो सब यूज करके देख चुके हैं चैट जीपीटी वगैरह में. क्या आप उसको बोलोगे कोई कॉन्सेप्ट पे पोएम लिखे, और वो भी शेक्सपियर के स्टाइल में, और सोनेट लिखे, विच इज अ 14 लाइन वेरी स्पेसिफिक स्टाइल पोएम, इट कैन राइट. आप एक जापान की एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोएम होती है हाइकू, तो वो लिखने बोलो तो वो लिख देगा वो. ठीक है. या आप उसको एक बताओगे कि मुझे एक पेंटिंग चाहिए है जिसमें कि ये एलिमेंट्स होंगे, और वो इस पर्टिकुलर पेंटर के स्टाइल में चाहिए, लेट्स से वैन गो के या रविंद्रनाथ टैगोर के या जो भी, वो कर देगा. आप बोलोगे कि मुझे एआई पे आर्टिकल लिखना है, तो एआई पे भी आर्टिकल लिख के दे देगा. ओके. तो और नॉट ओनली दैट, यू कैन टेल इट दैट आई वांट अ वीडियो प्रेजेंटेशन मेड ऑन समथिंग, तो वो वीडियो भी बना देगा. ओके. प्रोबेबली वी आर कैरेक्टर्स. योर इम्प्रेशन. पर ऐसा वीडियो भी बनाया जा सकता है एआई से, एआई पे या किसी भी टॉपिक पे जिसमें आपको लगेगा हम दोनों बातें कर रहे हैं, पर एक्चुअल में हम लोगों ने उस पर कुछ भी नहीं बोला है. ठीक है. तो इस लेवल पे तो एटलीस्ट है, उससे भी आगे है. अब ये कि वर्क कैसे करता है. ओके. एआई सुना तो बहुत है, होता क्या है, तो एक्चुअली उसमें इंटेलिजेंस है क्या, और ये सब, और विल एआई टेक ओवर द वर्ल्ड लाइक वी सीन इन मूवीज. पर वो टॉपिक्स पे हम नहीं जाते हैं. पर मेन इंपॉर्टेंट इज हाउ डज इट वर्क. तो इट फाइनली इट्स अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट. और उसमें क्या होता है कि आपको जैसे उसको ट्रेनिंग देना है कि पेंटिंग्स बनाने की, तो पहले तो उसको अलग अलग तरह की पेंटिंग्स उसको दिखानी पड़ेगी, व्हिच मींस ट्रेनिंग. जैसे हम बच्चे को बोलते हैं, बार बार उसको बोलते हैं पानी का गिलास है, पानी का गिलास है, तो वो समझ जाते हैं पानी. ओके. ये डॉग है, ये डॉग है, डॉग है बोलते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे समझ जाता है कि ये डॉग है, ये मम्मी है, ये मम्मी है, ये पापा है. तो जस्ट लाइक दैट, same way you train the AI, which is just a software which is just absorbing data. और वो जब एब्सॉर्ब कर लेता है तो उसके दिमाग में कुछ कुछ पैटर्न बन जाते हैं. तो पहले एक उसमें ट्रेनिंग फेज होता है जिसमें बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा लगता है नॉर्मली.
अब उसमें भी एडवांस टेक्निक्स आ गई जिनको थोड़े से अमाउंट ऑफ डेटा में काफी सारा सीख जाते हैं, पर एक ट्रेनिंग फेज है और उसके बाद इन्फ्रेंस। जब आप उसको, तो हम जब चैट जीपीटी जैसे यूज कर रहे हैं तो हम इन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन जब चैट जीपीटी जिसने ट्रेन किया है, उन्होंने 3-4-5 साल से उसको ट्रेन किया जा रहा है, उसमें डेटा दुनिया भर का इंटरनेट का लेके 2021 तक का डेटा लेके उसको ट्रेन किया। तो ये ट्रेनिंग मोड एंड देन यूज मोड। Still, there are certain things which are not clear when it comes to AI, especially the regulatory framework, right? And do you see that as a risk, that how governments become active, and again there is always this fear of AI becoming too powerful and creating a threat for humanity itself. Do you see that kind of a risk? Yes, for there these will be companies? regulations. So it's a risk and opportunity, I would say. Okay, regulation होना जरूरी भी है क्योंकि डेटा प्राइवेसी का इशू है। विदाउट डेटा देयर कैन बी नो एआई, और डेटा मास स्केल पे यूज करना है तो ऑब्वियसली मिसयूज हो सकता है, तो उसके ऊपर फिर कंसर्न्स आते हैं प्राइवेसी के, और किसका डेटा है, कहाँ जाएगा। तो हर कंट्री ने बनाया कि भाई हमारा डेटा हमारी कंट्री के बाहर नहीं जाएगा, राइट? इंडिया ने भी बनाया, यूरोप ने बनाया, नंबर 1। नंबर 2, आप विदाउट परमिशन डेटा नहीं यूज कर सकते हो, राइट? तो ये अभी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन आई कैन विजुअलाइज अ सिचुएशन वेयर इन फ्यूचर people will give consent for certain level of data collection on an anonymous basis, ठीक है? कि मतलब मेरे नाम से टैग मत करो, ठीक है? और वो डेटा अलाउ किया जाएगा, लेकिन वो अलाउ करने में मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए मैं अलाउ करूंगा। और उसके गवर्नमेंट डिफाइंड या जो भी है रेगुलेटरी डिफाइंड हो सकता है, इंडिपेंडेंट, जस्ट लाइक सेबी एंड एसईसी इज देयर फॉर स्टॉक मार्केट्स, आरबीआई और फेड इज देयर फॉर मैनेजिंग द बैंक्स एंड ऑल दैट। हो सकता है डेटा रेगुलेशन की एक और एजेंसी आ जाए 5-7 साल में, और वो एजेंसी बहुत ही टेक्निकल होगी, वो डिफाइन करेगी हाउ एवरीथिंग हैज टू बी डन, एंड प्रोबब्ली देयर विल बी नेशनल लेवल डिपॉजिटरीज ऑफ डेटा, एनोनिमाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड वे, एंड डिपेंडिंग ऑन मुझे कितना शेयर करना है, लेट्स से लेवल 1 इज वेरी लो शेयरिंग, लेवल 5 इज आई एम विलिंग टू गिव लॉट ऑफ शेयरिंग, नाउ ऑफ कोर्स देन देयर इज अ प्रॉफिट पूल मे बी फॉर यूजिंग द डेटा, और उसमें से मुझे भी कुछ रॉयल्टी मिले बिकॉज मैंने अपना डेटा दिया। तो ये सब इवॉल्व होगा, कैसे होगा अभी नहीं बोल सकते, एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ कि कैसा हो सकता है ये, और डेमोक्रेटाइज्ड वे में ही होगा और बंद नहीं होगा। ये आई एम प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंट दैट बंद नहीं हो सकता, बिकॉज in fact now countries are competing on their AI capabilities, so no country would like to stop development of AI, because आपने तो stop कर दिया, बाकी country तो कर रही है, तो वो आगे निकल जाएगा। तो every country will be focused on encouraging AI more and more, but yes, regulate it so well that misuse ना हो उसका, okay? तो ये होगा, everyone is competing on AI, okay, country by country, because that is going to give you the competitive advantage as well. So great. So I think regulatory risk come hai when it comes to investing. Obviously, it's a innovative, fast growing opportunity. So there is a investment rationale here to take exposure to. The risk is more from what we have discussed, that trying to chase the next multi-bagger. Which type of companies are involved in this in AI this case revolution? What we have to keep in mind is that the economic impact is expected to be something like in 10 trillion plus, right, by 2030. The market size itself would be in a trillion or 2 trillion size, at least direct what is called AI revenue, right? So ये इस तरह के very large numbers हैं, और ये तो numbers एक चीज हो गई। Secondly, the kind of transformation it is going to do. Already it has done. Like today, all your spell check and all that is way beyond that. The grammar correction is way beyond that. You don't even realize it in your Microsoft Word or in Gmail when you're using it. Can even complete your sentences, etc. Right? तो ये जो चीज है ये already use में है. Next 10 years में तो कितना use हो जाएगा आप imagine नहीं कर सकते हो. It's transforming the world economy. That is very critical that you understand that. Now, how do you identify those companies? तो इसका इकोसिस्टम समझ लेते हैं कि AI इकोसिस्टम कैसे रहेगा। तो AI इकोसिस्टम ऐसे रहेगा कि इसमें कुछ कंपनीज है which are the AI creators or platform providers, right? Which are providing you those tools using which you can do AI. And then there will be users, companies which will use the AI. ठीक है? तो companies which are using AI is a different category. Companies which are producing AI is one category. Let's focus on the providers of the AI platforms. Right. So there is the AI engine or AI hardware
then AI engine, and then on AI engine, then there is the AI softwares and the service providers to provide this, use these AI engines and solve the needs of the customers, the users. So there are these AI service providers. Now AI service providers are all practically, not all, lot of them are outside India, but majority of them are Indian IT service providers. Okay, they are going to be, because that's the kind of large numbers of human beings required who can actually use these AI engines, use the data of those AI user companies. Let's say Nike is, for example, an AI user company, or Target or Walmart, all these. So AI service providers will take their data, use these engines, and generate insights for them. Okay, so this is the Indian IT service space. Now AI platform providers are typically, and of course I'm not saying there are not some Indian companies as well. There's some very good Indian companies in that, but they're probably not listed. So majority of the main engines or platforms are by US companies. Okay, so that is where the AI hardware, including the AI chips, memory chips, specialized chips are required for memory, for processing, and for networking is also special, that 5G etc. very high speed data transmission is must, because this requires a lot of data. And then there are companies which are making those AI engines like GPT 1, 2, 3, 4, or each company has their own engines. So those engines are the provided on the platform and people can use them. I think on this note we can end this discussion. Thank you so much for joining us. Thank you.